प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, एम, इज, आर, इंट्रोडक्शन। जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या हैं मुख्य क्रिया वर्ब के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है, जैसे कि आप नीचे दिए गए उदाहरणों में पाएंगे। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। मैं अच्छा हूं, मैं चालाक हूं, हम लोग धनी हैं, आप लोग स्वस्थ हैं। आई एम गुड, आई एम क्लेवर, वी आर रिच, यू आर हेल्दी। नोट, ऊपर दिए गए वाक्यों में अगर भूतकाल समय सूचक शब्द रहे तो वाक्य के अनुवाद हैव बीन, हैज बीन के प्रयोग से होगा। जैसे मैं कुछ दिनों से बीमार हूं का अनुवाद आई हैव बीन इल फॉर 2 days होगा, परंतु मैं बीमार हूं का अनुवाद आई एम इल होगा। इस अंतर को ध्यान में रखें। हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विस्तार पूर्वक किया गया है। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब ऐसे वाक्यों पर विचार करें जो नकारात्मक है, जैसे मैं खुश नहीं हूं, वे लोग किसान नहीं हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना बहुत ही आसान है, बस आप एम, इज, आर के बाद नोट लगा दें। मैं बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट बैड। तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। राम धनी नहीं है, राम इज नॉट रिच। वे लोग ईमानदार नहीं हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम चालाक हो, क्या आप डॉक्टर हैं। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हों उनका अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर से शुरू करें। जैसे क्या वह मोटी है, इज शी फैट। क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर। क्या बच्चे भूखे हैं, आर द चिल्ड्रन हंग्री। क्या वह नाविक है, इज ही अ सेलर। डू प्रैक्टिस इन राइटिंग हिंदी वाक्य एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। WH वर्ड, व्हाई एंड हाउ का प्रयोग। जब वाक्य में क्यों, व्हाई या कैसे, हाउ प्रयुक्त रहता है तब सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो जाती है। WH, व्हाई, हाउ प्लस एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ पूरक होता है। आप यहां कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर एडजेक्टिव और नाउन दे सकते हैं। आप कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर एडजेक्टिव एंड नाउन दे। मैं कैसे दोषी हूं, हाउ एम आई गिल्टी, क्वेश्चन मार्क। हम लोग कैसे गरीब हैं, हाउ आर वी पुअर, क्वेश्चन मार्क। वे लोग कैसे बुरे हैं, हाउ आर दे बैड, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों दुखी है, व्हाई इज शी सैड, क्वेश्चन मार्क। वे लोग क्यों उपस्थित नहीं हैं, व्हाई आर दे नॉट प्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड whatever sentence we are utilizing in present, same sentence we are utilizing in past, and same sentence we are utilizing in future. There are only 3 differences in these all 3 forms. Present tense में हम I'm happy कहते हैं, मैं खुश हूँ। Past tense में हम I was happy कहते हैं, मैं खुश था। और future tense में हम I shall be happy कहते हैं, मैं खुश रहूंगा। समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि अगर हम एक प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से समझते हैं तो हमें पास्ट टेंस को समझने में और सहायता मिलेगा, फ्यूचर टेंस को समझने में और सहायता मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू से, इट्स अ वेरी गुड सेइंग, hope is a walking dream. Just try to understand. Keep your hope alive that you are going to become a good speaker of English. And I'm giving you 100% confidence within you, belief within you. If you have a will, you will find this book as a way
to walk and to achieve your destination. Friends, again I am going to say, if you have a destination, I have created a way for you. These all are created by me for the last 20 years of tirelessly teaching for the spoken English. There are thousands of students who have already completed their course. They are speaking very good. They are doing well in their life. Now, I'd like to say you, if you want to become a good speaker of English, this is the only way where you can meditate yourself and you can go ahead. Friends, I have already spoken to you. I'm going to give you only 7 chapters in grammar. Grammar is really vast. As you understand, we study grammar from first standard to till wherever you want to study. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. Every standard has their own level of grammar. But when you want to become a speaker of English, at least you need to understand the basic part of grammar. And this basic part will allow you to frame the sentence. Now, I'm going to start the chapter with a set example for you with the help of am, is, are in present tense, was, were in past tense, and shall be, will be in future tense. Friends, as you know, now we have finished 7th chapter of our workshop on spoken English. Now we need to understand and we need to meditate to understand how to become a good speaker of English. Now I can tell you one thing. You need to understand how to make the sentence or sentences in the present, past, future, or if you can make the sentence in present, past, future, you can become a speaker of English. मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ good morning, good afternoon, good evening is not a English. To become a speaker of English, you need to create your own sentence. जैसे हम हिंदी में बात करते हैं. Whenever we speak Hindi, Marathi, Gujarati, Telugu, Tamil, Punjabi, whatever our Indian regional languages are there, what we do, we don't remember it. These all languages are already fitted on your tongue. तो आपको ये सोचना है कि जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो आदमी कहता है कि हम सोचते हैं और उसके बाद बोलते हैं. Yes, that is right. But the process of thinking and speaking are totally different. But जब ये टाइम आता है इंग्लिश बोलने का, तो हमें क्या करना पड़ता है? हम अपनी भाषा में सोचते हैं, हम अपनी मदर टंग में सोचते हैं, हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और उसको फिर इंग्लिश में बोलते हैं. इसके लिए यह कठिन होता है क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं, मराठी में सोचते हैं, गुजराती में सोचते हैं, पंजाबी में सोचते हैं, तेलुगु में सोचते हैं, तमिल में सोचते हैं, बंगाली में सोचते हैं, उड़िया में सोचते हैं और हमें बोलना होता है इंग्लिश में. जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होता है वो बहुत ही लेंदी होता है और हम फ्लम्ब हो जाते हैं. इसके लिए हम कहते हैं आई एम नॉट फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश. हम फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हम धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद द प्रोसेस ऑफ योर फर्स्ट मेडिटेशनल चैप्टर that you can consider it as a
first day as a meditation. That is the am, is, are in present tense, how to utilize it. Now, you need to understand, if you want to build anything, you need to understand the basic structure of sentences. As we may go through so many process of understanding in our life of study, we understand little structure. Similarly, there are so many structure of sentences, but I can assure you, with the help of these two structure of sentence, you can become a good speaker of English. The first is, you need to understand what is subject and what is main verb and what is object and complement and what is helping verb. So in your manual book, in your workshop manual book, it is already given subject plus main verb plus object and complement equal to one sentence. That is the basic sentence. So you need to understand the form of sentence, the structure of sentence. The first we say simple structure, second we say along with helping verb, auxiliaries verb. The first is subject plus verb plus object. For example, I go to a school. So I is the subject, main verb is go, and object and complement is school. मैं school जाता हूँ. Now the second structure of sentence, subject plus helping verb plus main verb plus object and complement. As a sentence, I can say, I am going to a school. I is subject, am is helping verb, going is main verb, and school is the object and complement. मैं school जाता हूँ. In the similar way, there are 6 structure of the sentences. The first is subject plus am is are plus object. Second is subject plus am is are plus not plus object. Third is am is are plus subject plus object plus question mark. Fourth is am is are plus subject plus not plus object plus question mark. Fifth is WH word plus am is are plus subject plus object plus question mark. Sixth is WH word plus am is are plus subject plus not plus object plus question mark. So there are 6 kinds of sentences, or we are going to study only these 6 kinds of the sentences. First is affirmative, second is negative, third is interrogative, fourth is interrogative negative, fifth is WH interrogative, sixth is WH interrogative negative. Now we need to do the practice in the meditational way. As I told you, there are 13 kinds of person in the world. So you and your is a common. So we take only one, you, as a in both form. Now we are going to do the meditational way of practice of am is are. For example, we can say, I am happy, I am not happy, am I happy, am I not happy, how am I happy, how am I not happy, we are not happy, are we not happy, how are we happy, how are we not happy, you are happy, you are not happy, are you not happy, how are you not happy, he is happy, he is not happy, is he not happy, how is he not happy, she is happy, she is not happy, is she not happy, how is she not happy. That is happy, that is not happy, is that not happy, how is that not happy. This is happy, this is not happy, is this not happy, how is this happy, how is this not happy. It is happy, it is not happy, is it not happy, how is it not happy. As a name, we can say name is happy, name is not happy, is name not happy, how is name happy, how is name not happy.
They are happy, they are not happy, are they not happy, how are they happy, how are they not happy. These are happy, these are not happy, are these not happy, how are these not happy. Those are happy, those are not happy, are those not happy, how are those not happy. Friends, I can tell you, in the world there are only these 72 sentences comes under the am is are form. Now, we need to understand, with the help of this 72, can we become a good speaker of English? Of course, no. You need to do the practice on the basis of am is are with the different form of sentences. Now, this am is are will allow you to twist your tongue. Your tongue will be twisted with the am is are. So whenever you will speak with the help of am is are, your tongue will not allow you to do the wrong pronunciations. Means after completion of this chapter, you will not apply along with I, are, along with we, am, along with I, is, because the chapter, when you will complete, your tongue will be twisted with the use of am, is, are. मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर. मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी. तुम लोग आलसी हो, यू आर डल. वह नेक है, ही इज जेंटल. यह आकर्षण है, इट इज अट्रैक्टिव.